I would like to invite our first resource person, Professor Lole Ajit Kumar sir, to address the session. Sir, you are welcome to address the session. Okay. Over to you. Thank you sir. very much. Yeah. Thank you very much, madam, for nice introduction. Yeah. Thank you. So, good afternoon all, respected faculty members and my dear student friends. Today, I'm here to deliver a lecture on introduction to remote sensing and GIS. Is it audible to all? And is it visible a screen? Yes, Yes, sir. You sir. are audible. Yes, sir. Now your PowerPoint presentation should be on the presentation mode, sir. Okay. Yeah. Thank you very much. It is visible, sir. Please go ahead. Okay. Thank you. Yes, Sir. sir. Thank Yes, you. Today's topic is introduction to remote sensing and GIS. Before going to start the topic, I would like to brief about in remote sensing and GIS. It is today's basic need to all. Basically, a civil engineer. They want to upgrade knowledge day by day. And today, I'm here to upgrade all civil engineers for an advanced tool called remote sensing and GIS. We all heard about remote sensing, GIS. So today's lecture content is divided into 3 pages. First page is about remote sensing. Second page is about geographical information system, that is GIS. And the last phase, phase 3, is case study, hands-on training on QGIS software. So let's start the session. Remote sensing. Remote sensing is the collection of information about an object without being in direct physical contact with the object. Study of any area or object without any physical contact. If any area is cannot be accessible, अगर कोई एरिया जो है जो एक्सेसिबल ही नहीं है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, उस एरिया का भी हम स्टडी रिमोट सेंसिंग के द्वारा कर सकते हैं. So remote sensing is nothing but the study of any area or object without any physical contact. This is the process of collecting information about Earth's surface phenomena using sensors, not in physical contact with the surfaces and phenomenon of interest. Sensor is the most important here for collecting the information. As a human being, we have many sensors. Some remote sensor, ear, eyes, retina of eyes and ear. We can sense the volume with the help of eyes, with the help of ear, and with the help of eyes we can catch the all kind of activities on the surfaces. Or whatever you see is nothing but the remote sensing. Digital camera, then binocular. We have, अब सबके पास हमारे मोबाइल भी है, मोबाइल फोन भी है, मोबाइल फोन कैमरा इनेबल भी है. So we all study the sensors. We all study the sensors which are useful for remote sensing. Remote sensing, there are 2 types of remote sensing: passive remote sensing and active remote sensing. In passive remote sensing, source of energy is either the sun or Earth's atmosphere, and in active remote sensing, source of energy is part of the remote sensor system, such as lidar, radar, ultraviolet rays, visible infrared. We discuss about later on that. Here we can see the passive sensors are Landsat, Aster, QuickBird, Iconus,
and active sensors are lidar and radar. Here we can see the sun, the passive reflector on the surface, then sensors. Here we see the image on that. We can understood. There are various. These are some theoretical information of remote sensing, active remote sensing and passive remote sensing. The method of collecting and interpreting information about terrain and other objects from distance within physical contact with the object. Then active system, this active remote sensing, the system in which artificially generated energy sources are used in known as active system of remote sensing. Example, remote sensing with radar. Passive system, the system in which naturally generated energy sources used to radiate electromagnetic energy of variable wavelength is known as passive system of remote sensing. Example is remote sensing with sun and earth material. Here is the flow direction, source of energy, then interfering atmosphere, then super remote sensor reflecting emitted energy, interaction at earth surface, unique response for each feature, a real-time data handling system, and delighted user. We see detail in, this is another example of remote types of remote sensing, active remote sensing and passive remote sensing. Here, source is the source is same as sensor, and in passive remote sensing, source is sun. The various steps, the flow of remote sensing, where to start and where to end. This is divided into various steps. A is the source, B is the atmospheric interaction, C is the target, D is the sensor, E is the receiving unit, F is the processing unit, G is the information system, H is the information. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोर्स सन दिखाई दिया है, then atmospheric interaction, then targeted area where you can we want information, that is these are यहाँ पे buildings दिखाई दे रही है, पेड़, then यहाँ पे टारगेट पे हिट करने के बाद फिर वापस जो रेज वापस जाते हैं, फिर एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन होता है वहां पे, देन सेंसर द्वारा कलेक्ट किया जाता है, देन अगेन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, देन रिसीविंग यूनिट रहता है जो एंटीना वगैरह वहां पे रहता है ऐसा, देन बाद में प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस करने के लिए जो कई कंप्यूटर्स वगैरह रहते हैं वो, देन प्रोसेस करने के लिए जो जरूरी रहता है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन प्रोसेस करता है वो, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग, वी रिक्वायर डाटा, so obviously information system is nothing but the human brain. And information, what kind of information we have, we can get with the help of information system. These are the steps of remote sensing. Then platform, there are three main platforms: ground-based platform, airborne platform and spaceborne platform. ग्राउंड पे से हम जो फोटोज वगैरह, डिजिटल कैमरा रहेगा या कोई भी रहेगा, मोबाइल रहेगा, मोबाइल फोन्स रहते हैं, वहां से जो फोटो निकाले जाते हैं वो रहता है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। देन एरोप्लेन और चॉपर जो रहता है, वहां पे जो नीचे सेंसर बिठाए जाते हैं और वहां पे जो सैटेलाइट, वहां पे जो इमेजरी या फोटोज वगैरह जो क्लिक किए जाता है वो रहता है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म। एंड स्पेसबॉर्न विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट वी कैन attach sensors to the satellite and click images and process on it. These are the three main platforms: spaceborne, airborne and ground-based platform. These are the some images taken from
various platforms. These are the aerial camera, multispectral satellite, radar satellite, hyperspectral sensors. This kind of images we can collect from the satellite. The data, that is spatial data. Then next is nothing but the electromagnetic spectrum, which is very important for remote sensing. So light phenomena. Isaac Newton believed light consists of particles, and by 1900 most scientists believed that light behaves as a wave. In that, crest, trough, and wavelength. Electromagnetic spectrum. I said that electromagnetic spectrum, the remote sensing, remotely sensed data can be collected with the help of various sensors, and sensors, which energy can catch the sensor and which energy can catch the human eye. This can be explained with the help of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum represents the range of energy from low energy, low frequency radio wave with long wavelength up to high energy, high frequency gamma wave with small wavelength. Electromagnetic spectrum. Below figure, we see the radio waves, gamma rays, and the microwaves, infrared, visible, ultraviolet, and X-ray. Visible light. Visible means visible light is a small portion of this spectrum. This is the only part of this energy range that our eyes can detect. Human eyes only detect visible light. What we see is rainbow of color. Vibjaw, tana pihini padaza tanai pani pi. Various colored vibrations, 7. There are different 7 colored vibrations we can see. So these are the visible electromagnetic spectrum, visible range. If we considered 100% of wavelength electromagnetic spectrum, only this portion can be visible, and only 2% of electromagnetic spectrum is visible to human eye. So measuring light band, officially we measure the different light band, and human eyes only measures visible light, and sensors can measure other portion of electromagnetic spectrum. So this is all about electromagnetic spectrum. This is important. So once again, another important topic, that is practical applications of remote sensing in civil engineering. Why remote sensing is essential for civil engineer? Nowadays, हर किसी को कोई भी काम करना हो तो उसको क्या चाहिए? वो काम अच्छा होना चाहिए, और ओनली अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा के साथ वो फास्ट भी होना चाहिए. तो अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग वर्क, जो प्रिलिमिनरी वर्क्स रहते हैं, वो बेसिकली सर्वे, अगर आपको फास्ट करना है तो आपको रिमोट सेंसिंग आना जरूरी है. तो practical applications of remote sensing. Applications of remote sensing with respect to natural hazards. In case of flood, earthquake, volcanic eruption, and related hazards, landslide, tsunami, cyclone. हर बार अगर फ्लड आ रहा है तो फ्लड की सीवियरिटी क्या है, वो जानने के लिए हमको रिमोट सेंसिंग का सहारा लेना ही पड़ता है. Then environmental application. In fact, series of satellite used for weather forecast. आप
हर रोज न्यूज में देखते हैं कि आज बारिश होगी, आज बारिश होने के आसार है, साइक्लोन यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस तेजी से आ रहा है। तो ये सब किस वजह से और किस गुना पे बताते हैं? तो ये सब पॉसिबल हो पाया है तो वो सिर्फ रिमोट सेंसिंग की वजह से। वेदर फोरकास्ट, साइक्लोन, क्लाउड, विंड वेलोसिटी, सी स्टेट, pollution, global warming, and ozone layer depletion can study with the help of remote sensing. Then mineral exploration, minerals, solid, homogeneous. Mineral is nothing but the solid, homogeneous, naturally occurring substance which has definite chemical composition, definite atomic structure, and formed by inorganic process of nature. The various minerals we can explore or we can find with the help of a remote sensing. Detailed exploration of non-renewable resources like minerals and fossil fuel, geological data, location of minerals, mapping of mineral zones. This can be studied with the help of, again, remote sensing. Then land use and land cover analysis. Land use for urban purpose, agricultural, sea forest, etc. Particular cropping pattern, spread area. We can study the land use and land cover with the help of remote sensing. Then archaeology, to recognize archaeological patterns of prehistoric land use, buried archaeological important sites can be studied. Then revision of topo sheets. Topo sheets are the maps which are included all the things which are in that we can see all the things, means in contour, then that is topography and geology and all other things, physical things we can measure with the help of topo sheets. The revision of topo sheets can be done with the help of aerial photograph, satellite imaging, survey of department, India department undertaking such work. The satellite imagery and aerial photographs are useful to updating the topo sheet. Then alignment of new highway and railway lines. By using aerial photograph and satellite imagery, location of most economical alternative sites of such work may be carried out easily. Then location of gravity dam sites. Geological investigation of dam can be carried at using aerial photographs and satellite imagery. Geological features such as folds, faults, dikes, fracture, rock type can be studied with the help of remote sensing imagery, satellite imagery. Then tunneling, another civil engineering structure. Geological information, fault, fracture along alignment of tunnel is furnished by aerial photograph and satellite imagery to ensure safety during construction and maintenance of tunnel. Then silting of storage reservoirs, harbors, etc. Silting of रिजर्वायर में कोई भी रिजर्वायर, डैम रहे या फिर जो लेक रहता है वो लेक, वहां पे हर साल जो सिल्टिंग गाळ जो साठतो तो गाळ किती प्रमाणामध्ये साठतो त्याचा अभ्यास देखील आपल्याला रिमोट सेन्सिंगच्या आधारे करता येतो. सो silting of storage of reservoir. Satellite gives imagery idea about silting of reservoir, reduce reservoir capacity. Because of silting, the capacity of reservoir is reduced qualitatively and quantitatively, and silting of harbor reduces navigational depth. जो पर्पज रहता है रिजर्वायर का वो storing of water, water storage. If silting takes place, the storing capacity, water storing capacity is reduced. So how much silting per year can be studied or measured with the help of remote sensing and along with GIS.
Then location of percolation tank. Location of percolation tank. To locate exact location of percolation tank from geological investigation of permeable foundation to increase groundwater table by using satellite images. Percolation tank. गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं परकोलेशन टैंक के, परकोलेशन टैंक का पर्पज रहता है परकोलेट वाटर, द आउटपुट ऑफ दैट परकोलेशन टैंक टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर टेबल. बट यहाँ पे क्या होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं हुआ तो परकोलेशन टैंक जो पर्पज रहता है वो फुलफिल नहीं होता. परकोलेशन टैंक की बजाय इवेपोरेशन टैंक में हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. एंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ परकोलेशन टैंक कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी. देन seepage losses in canal. By careful study of aerial photograph and satellite imagery, soil moisture in and around the canal system can be monitored and identify the seepage through the canal. Location of bridge site. Careful study of aerial photograph and satellite imagery used to analyze existing foundation conditions along the proposed bridge construction site to find economic and safe alignment of bridge. We can find out the location of bridge site with the help of remote sensing along with again GIS. Study of catchment and command area of dam site. Aerial photograph and satellite imagery used to ascertain the catchment area and command area of dam site. We can find out the how much catchment is available for dam site with the help of remote sensing and GIS. Few advantages and limitations of remote sensing. Advantages of remote sensing: provides data for large area, provide data for very remote and inaccessible area also, easy and rapid collection of data, rapid production of map for interpretation. These are few highlighted advantages. Then the limitations of remote sensing. The interpretation of imagery requires certain skill level. अगर इंटरप्रिटेशन कोई भी इमेजरीज करना है तो आपको पहले इमेजरीज के बारे में जानना जरूरी रहता है. सो आपको वो वहां का क्या जानना है वो जानने के लिए सर्टन स्किल की जरूरत रहती है. तो अगर आपके पास वो स्किल है तो आप इंटरप्रेट इजी से कर सकते हैं. अगर आपके पास नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा. सो देन नीड्स क्रॉस वेरिफिकेशन विथ फील्ड सर्वे डाटा. This is most important. This is more important. Cross verification. हम 100% remote sensing पे डिपेंड नहीं रह सकते. We can cross verify the any project with the field also. During case study or hands-on training, I will explain it why it is important. Then objects can be misclassified or confused. Object can be misclassified or confused. Again, most important sentence, because of resolution. I will discuss later. Then it is expensive. Expensive. Once again, the data, that is special data we collect, this is more expensive. Because of that, the work carried by the remote sensing and GIS, it is expensive one. So this is about remote sensing information.
Then let's start the GIS, the point of our interest. GIS is nothing but the Geographical Information System. I think audible to all. Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you very much. Geographical Information System. Geographical Information System. What is it? Geographical information is a computer-based information system. Computer-based information system. The data which are collected from remote sensing, that is remotely sensed data, is formulated or processed in the software, is nothing but the GIS software. So GIS is nothing but a computer-based information system. It is a system for capturing, storing, checking, integrating, manipulating, analyzing, and displaying data which are spatially referenced to the Earth, that is data identified according to their location. GIS is an organized collection of computer hardware because GIS software requires computer hardware. It is computer-based information system, so it requires computer hardware. Then software, geographic data. And personal and efficiently capture. जो डाटा रहता है वो कैप्चर अच्छी तरह से किया हुआ होना चाहिए. Then store, update, manipulate, analyze, and display all forms of geographically referenced information. आपको जो डाटा जरूरी है, जो चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, वो आपको मिल सकता है with the help of GIS software. GIS, again, I would like to repeat, it is a computer-based information system. Geographical information system is a computer-based information system. Then, principle of GIS, these are the data capture, database management and update, geographic analysis, preparing results. Data capture, data source are mainly obtained from manual digitization and scanning of aerial photographs, paper maps, and existing digital data sets. जो डाटा रहता है वो हम अपने पास किसी भी फॉर्मेट में हो, वो डिजिटाइज होना जरूरी है, तभी वो आइडेंटिफाई होता है. अगर आपके पास वो डिजिटाइज नहीं है डाटा, डिजिटाइजेशन फॉर्म में, तो वो आइडेंटिफाई नहीं होता. अगर मैं मेरा फोटो आपके पास रखता हूँ, आपको मैं कौन हूँ मालूम नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपके पास जो फोटो है और किसका है बताए तो आप बता सकेंगे क्या? तो नहीं बता सकते. तो इसीलिए जो कोई भी डाटा है वो हमको क्या चाहिए? डिजिटाइजेशन फॉर्म में चाहिए. अगर नहीं है तो हमको वो डिजिटाइज करना पड़ता है. तो डाटा कैप्चर, देन database management and update, data security, data integrity, and data storage and retrieval, and data maintenance ability. These are the data management, database management and update. Because whatever data we're getting must be secure. Nowadays, hacking term you all heard. All kind of data can be hacked. So data, whatever data we collect, that data must be secure. Then geographic analysis. The collected information is analyzed and interpreted qualitatively and quantitatively. जो कोई भी डिटेल्स हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो एनालाइज भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है, तभी हमको समझ में आएगा कि डाटा वो सही है या नहीं है. Then preparing results. One of the most existing aspects or exciting aspects of GIS technology is the variety of different ways in which the information can be presented. आपको information क्या चाहिए, फिर
किस फॉर्म में चाहिए, आपको जो चाहिए वो GIS दे सकता है। इसलिए different ways in which the information can be presented. Principle, then function, again data capture. The input of data into GIS can be achieved through many different methods of gathering. For example, aerial photograph, scanning, digitizing, GPS and global positioning system. GPS nothing but global positioning system is just a few of the ways in GIS user can obtain data. Then data storage. Some data is stored such as map in a drawer, while डाटा हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं वो बताना चाहता हूं मैं। अगर आप हमारे पास मैप, बड़ा मैप है, तो हम टेबल के ड्रॉवर में स्टोर कर सकते हैं। while अदर सच एज डिजिटल डाटा है, तो वो डाटा हम कंप्यूटर में हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, CD या हार्ड ड्राइव में हम सेव कर सकते हैं। देन डाटा मैनिपुलेशन, द डिजिटल ज्योग्राफिकल डाटा कैन बी एडिटेड. This allows for many attributes to be added, edited or deleted to specification of project. जो कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के हिसाब से हम जो डाटा कलेक्ट किया होता डाटा रहता है, डिजिटल ज्योग्राफिकल डाटा रहता है, उसको हम एडिट कर सकते हैं। जो जरूरी नहीं है उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। जो हमको चाहिए उसी फॉर्मेट में आपको GIS सॉफ्टवेयर डाटा दे सकता है। देन क्वेरी एंड एनालिसिस, GIS was used widely in decision making process for a new commission district. We use population data to help establish an equal representing the population to area for each district. हम एनालिसिस कर सकते हैं कि each district में क्या क्या पॉपुलेशन है, वो सभी हम एनालाइज इसी GIS इंटरफेस में कर सकते हैं। देन विजुअलाइजेशन, दिस रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू डिस्प्ले आवर डाटा, योर मैप एंड इंफॉर्मेशन. दिस इज अबाउट फंक्शन. देन component of GIS. Hardware, as earlier I said, hardware, computer system, scanner, printer, plotter, flatboard, these are hardware systems. Computer, if you have laptop, the configuration must be, minimum configuration is 4 GB RAM. RAM must be 4 GB. Then the GIS software smoothly works. Then software, the various software are used for GIS. In that, you heard the AutoCAD. AutoCAD is widely used civil engineering software, but this is one kind of GIS software. Then Surfer, ArcGIS, QGIS, etc., etc. Out of that, the Surfer and ArcGIS is paid version software, and QGIS is an open source software. QGIS is nothing but quantum GIS. ArcGIS, the price of ArcGIS is about 1 lakh. Tentative price is 1 lakh license copy of ArcGIS. But in QGIS, it is open source software. You can download the software on QGIS website. Then data. A GIS will integrate spatial data with other resources and can even use a DBMS, database management system, used by most organizations to maintain their data. To manage spatial data, geographic data, and related tabular data can be collected in-house or purchased from a commercial data provider. People, GIS users range from technical specialists who design and maintain. Method, the map creation can either be automated raster or vector creator, or it can be manually vectorized
using the scanned images. The raster, vector, these terms are new for you. We can learn in next slide. So there are two types of data. Mainly used in GIS, spatial data and non-spatial data. Spatial data is in two forms, vector data and raster data. Vector data in the form of point, lines and polygons, and raster, cell, pixel and image. The vector data type, the point is a single node, a dot. Dot is nothing but the point, line or root. Line is two nodes with an arc between them. Line, simple draw line. Then polygons or region. Polygon is a closed group of three or more arcs. Polygon. With these three elements, it is possible to record most all necessary information. Below figure, in first figure, we see the point, that is vector. Then middle figure is line, vector data. And last figure, that is polygon or any kind of region. Vector data are good at accurately representing the true shape and size. Accurately representing the true shape and size. Then representing non-continuous data. अगर कोई रिवर है या पॉलिटिकल बाउंड्री है या रोड है, माउंटेन पीक्स ऑल्सो, हमको रिप्रेजेंट करना है तो वो वेक्टर डाटा की मदद से हम आराम से कर सकते हैं. देन क्रिएटिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग मैप. एस्थेटिकली अगर कोई हमें चित्र निकालना है जो प्लीजिंग रहता है, वो भी हम वेक्टर डाटा की मदद से कर सकते हैं. Then conserving display. This is vector data requires low disk space. Low disk space. Vector data अगर हमको स्टोर करना है तो उसके लिए डिस्क स्पेस की ज्यादा जरूरत नहीं रहती. डिस्क स्पेस की ज्यादा जरूरत नहीं रहती. Disadvantages of vector data type. Disadvantages. इससे पहले हम एडवांटेजेस, दैट इज गुड एट, मैंने यहाँ पे लिखा था, और यहाँ पे जो है डिसएडवांटेजेस. द डाटा स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स, especially when you have fully encoded topology using arc node model. Data structure is more complex. डाटा हमको अगर डिजिटाइज करना पड़ता है तो डाटा डिजिटाइज करते वक्त एक पॉइंट भी अगर मिस हो गया तो डाटा मिसप्लेस हो जाता है, एक पॉइंट का डाटा. सो डाटा स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स. इट इज मोर डिफिकल्ट टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू मैनिपुलेट डाटा. जो डाटा हमारे पास रहता है वेक्टर का, वो डाटा मैनिपुलेट करने के लिए जो अगर हमको कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा तो वो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है. एंड स्पेशियल एनालिसिस ऑपरेशन कैन बी मोर डिफिकल्ट. वन सेकेंड. इफ अगर हमारे पास एक इमेज है, इमेज में पूरा ग्राउंड है, वाटर बॉडीज है, देन ट्रीज है, बाद में रोड्स भी है, कंटूर लाइंस भी हमें अगर ड्रॉ करना है वहां पे, तो पूरा जो डाटा है वो अगर हमें ऑपरेशन, दैट इज हमें अगर वो डिजिटाइज करना पड़ेगा तो वो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है. इसके लिए टाइम बहुत, इट इज टाइम कंज्यूमिंग डाटा टाइप. therefore I placed it as a disadvantage, that is spatial analysis operation can be more difficult. Then raster data, second most spatial data, that is raster data. It is
cell-based data such as aerial imagery and digital elevation models, characterized by pixel value. Basically, raster file is giant table where each pixel is assigned a specific value from 0 to 255. अगर हमें अगर फोटो निकालना है तो फोटो की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है? अगर अच्छी फोटो क्वालिटी चाहिए तो हमको क्या चाहिए? हाई पिक्सल वाला मोबाइल चाहिए, हाई पिक्सल वाला कैमरा चाहिए। सेम रास्टर डाटा भी पिक्सल बेस्ड डाटा रहता है। बेसिकली रास्टर फाइल इज a giant table in that vertical rows, horizontal rows and vertical columns. In that, each and every cell having specific value. It is value 0 to 255 value. In raster data type, the primary data object is cell or pixel. You are familiar with this if you have used a digital camera mobile phone with camera. अभी मैंने वही कहा, अगर डिजिटल कैमरा है या फिर कैमरा इनेबल्ड मोबाइल है, अभी सबके पास डिजिटल कैमरा भी है और मोबाइल फोन है, वो जो कैमरा रहता है वो हाई पिक्सल के रहते हैं कैमरा, तो वो कैमरा भी डिजिटल कैमरा ही रहता है। तो हमें अगर कोई फोटो निकालना है तो हाई पिक्सल की जरूरत रहती है, लो पिक्सल रहेगा तो लो क्वालिटी रहेगी क्या फोटो की। सेम वैसा ही रास्टर का ही भी रहता है। रास्टर डाटा मॉडल रिप्रेजेंट द अर्थ सरफेस एज एन array of two-dimensional grid cells, with each cell having a associated value. I placed example below here. Cell, the brown color, 8 color, the complete brown color cell having value of x or y, xy coordinate value. Then cell value is nothing but a particular value in a single cell, that is cell value. And cell size, this is about cell size. Cell size indicates the resolution of particular data. Resolution of particular data frame is nothing but the raster data. Cell size and resolution, this is another data model. The size of the cell in the raster data model determines the resolution at which features can be represented. The resolution can have an effect on which features are represented in what location. Resolution बहुत ही जरूरी रहता है. अगर resolution अच्छा नहीं रहेगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं. So यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 10 मीटर रिजोल्यूशन है, 5 मीटर रिजोल्यूशन है और 1 मीटर रिजोल्यूशन है. अगर 10 बाय 10 मीटर बाय 10 मीटर रिजोल्यूशन का एक इमेज है, स्टाइल है 10 मीटर बाय 10 मीटर की, तो वहां पे हमें अगर एक ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन वही सेम स्टाइल अगर हमें 5 मीटर रिजोल्यूशन की रहेगी, 5 मीटर रिजोल्यूशन में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ब्लू और ग्रीन कलर दो कलर दिखाई दे रहे हैं, और वो जो बॉक्सेस है, सेल है, वो डिफरेंट सेल में दिखाई दे रहे हैं. डाटा तो सेम है, लेकिन अगर रिजोल्यूशन हाई हो गया, यहाँ पे 10 मीटर से 5 मीटर हो गया, तो हमें सिनेरियो विल बी डिफरेंट. एंड इफ वी गो फॉर another higher resolution, that is 1 meter by 1 meter resolution, the scenario is completely changed. यहाँ पे क्या है, 10 मीटर रिजोल्यूशन का ये एक टाइल है, वहां पे देखा तो सिर्फ ब्लू कलर दिखाई देता है, लेकिन 5 मीटर रिजोल्यूशन की टाइल में हमें 4 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, 4 ब्लॉक, और 4 ब्लॉक में 2 ब्लॉक में ब्लू कलर है और 2 ब्लॉक में ग्रीन कलर है. लेकिन 1 मीटर रिजोल्यूशन में वही टाइल देखे तो देखिए, आप देख सकते हैं 1 मीटर रिजोल्यूशन का सिनेरियो कंप्लीटली चेंज.
तो ये क्या क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो स्पेशल डाटा हम ले रहे हैं उसका रिजोल्यूशन क्या है, उसके हिसाब से हमें एक्यूरेसी मिलेगी। अगर हम 10 मीटर रिजोल्यूशन का डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो 10 मीटर के रिजोल्यूशन के हिसाब से ही हमें एक्यूरेसी मिलेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन raster data good as same as vector data. Raster data good as representing continuous data. Slope and elevation data can be represented continuously. Then representing multiple feature types, point, line and polygon at single feature type से single image में हम पूरा पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन जो है, जो वेक्टर में हमने सीखा था, वो पूरा हम सिंगल इमेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रास्टर डाटा. देन rapid computation in which raster layers are treated as elements in mathematical expression. Mathematical expression है वो हम with the help of raster data we can express very rapidly. Then analysis of multi-layer or multivariate data, satellite image processing and analysis example. And here hogging disk space, we required more disk space for raster data. So disadvantages of raster data type. Disadvantage: value must be stored for each and every cell in a grid. There is a great deal of redundancy and large storage requirement. We require large storage and we must be stored each and every cell grid because of safety. Then location can be captured only as accurately as the resolution allows, which is determined by the cell size. अभी पिछली स्लाइड में हमने इस स्लाइड में देखा था रिजोल्यूशन. तो रिजोल्यूशन जो है, रिजोल्यूशन के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगर हम 10 मीटर रिजोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं तो 10 मीटर के हिसाब से ही हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगर हमारे पास 10 मीटर के रिजोल्यूशन की इंफॉर्मेशन है और हमें 1 मीटर रिजोल्यूशन का चाहिए तो हमको नहीं मिलेगा. दिस इज द डिसएडवांटेज. एंड चेंजिंग रिजोल्यूशन कैन बी कॉम्प्लिकेटेड. अगर हमने 10 मीटर रिजोल्यूशन पे काम किया है और सेम काम हम 1 मीटर पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं 1 मीटर पे, तो सुपर इम्पोज या फिर वो काम पूरा डिफरेंट हो जाता है. If we change resolution, we do another work. So changing resolution can be complicated. Then another type of data, that is non-spatial data type. It is also known as attribute data. Attribute data is about what is a spatial data. What is a spatial data? हमारे पास जो स्पेशल डाटा है वो क्या है वो बताना मतलब attribute data. That is non-spatial data. In other words, attribute data are information associated with the geographical features. जो भी geographic map है वो map is nothing but the spatial data, and the information provided by map, that information is nothing but the non-spatial data, that is attribute data. It is non-graphic information that describes what a point, line, area or pixel is. In very simple words, it is the data that tell us about what things are.
अगर हमारे पास कोई डाटा है तो वो डाटा कौन सा है, जो कौन सा है डाटा वो बताना है। जो बताने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो डाटा रहेगा नॉन स्पेशल डाटा, दैट इज एट्रीब्यूट डाटा। Characteristics of attribute data: it is a list or table of data arranged as rows and columns. Attribute data, in a practical session I will explain that is attribute data कैसा रहता है। तो वही मैं अभी बता रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। It is a list or table of data arranged as row and column. Rows are record math feature. Each row represents a math feature which has a unique label ID or object ID. Column fields are, that is nothing but the characteristics of the particular data. Each column represents unique value of a feature. It has a unique name depending on nature of value. Intersection of column and rows shows the values of attributes like block name, district name, stages of groundwater discharge, percentage, etc., etc. Plenty forms are available in the data. Plenty of forms are available in data. So, GIS, what it does? Mapping and cartography, selecting, distance, buffer, overlap, clip, merge, vector analysis, raster analysis, both 2D and 3D format. We can learn we can do the GIS software with the help of GIS software. These things we can easily do, raster and vector analysis. Then applications of remote sensing, applications of GIS for land information, easy creation and maintenance of data for land records, land planning and land use, managing land registry for recording titles and land holdings. डिजिटल इंडिया जो स्कीम है उसके हिसाब से अगर आपके पास जीआईएस सॉफ्टवेयर का नॉलेज रहेगा, जीआईएस सॉफ्टवेयर का अगर नॉलेज रहेगा अलॉन्ग विथ सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको जॉब इजीली मिल सकता है। क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया के थ्रू हर विलेज, हर सिटी जो लैंड एक्विजिशन करते हैं और हमारे पास कितनी जमीन है वो हम जीआईएस एप्लीकेशन थ्रू, जीआईएस सॉफ्टवेयर थ्रू मेजर भी कर सकते हैं। तो डिजिटाइज करने के लिए अभी हर गांव में, हर विलेज और हर सिटी में बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं। तो टेंडर्स निकलने के बाद वो करना क्या चाहते हैं कि डिजिटाइज, जो कोई, अगर मेरी जमीन है, सपोज मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन मेरी कहाँ पे है और उसकी बॉर्डर क्या है, वो बॉर्डर डिजिटाइज करने का काम अभी चालू है। क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि 7/12 ऑनलाइन मिल रहा है, 7/12 भी ऑनलाइन मिल रहा है और हर कोई जो गवर्नमेंट का काम है वो काम हमको ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। तो वो सभी जो है वो किसकी मदद से हो रहा है, तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की मदद से हो रहा है। तो एप्लीकेशंस ऑफ जीआईएस इन एनवायरमेंटल फील्ड आल्सो, फॉरेस्ट मॉडलिंग, air or water quality modeling and monitoring, environmentally sensitive zone mapping, forest cover, soil quality and hydrologic coverage. These are the few other applications: map making, site selection, mineral exploration, land use planning and management, environmental impact studies, natural hazard mapping or assessment, water resources availability and management. So I think you all understood the spatial and non-spatial data, remote sensing, spatial and non-spatial data, remote sensing,
information. So now this is all about general information of remote sensing and GIS. I hope you understood the things. So now I would like to start the case study, which is vector analysis and raster analysis using QGIS software hands-on training. जो स्पेशल डाटा जो है वो इनपुट कैसे करना है, उस पर प्रोसेस कैसे करनी है, वो हम अभी QGIS सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सीखने की कोशिश करेंगे. Is it visible to all? Is it visible screen? Yes, sir, it is visible. Sir, it is visible. Okay, okay. So Dr. Ajit ji, हाँ बोलिए. please give information to the participants about this QGIS platform also, please. Okay, okay, okay. Yes, Okay. please. Go ahead. Okay, sir. Thank you. So the last session, that is case study or QGIS hands-on training, that is vector and raster data. QGIS is the open source software. The data we can collected from remote sensing. This data is in the form of raster and vector format. We can input this data in the QGIS interface. QGIS is an open source software which is easily available on the QGIS website. You can download it, install it on your laptop or PC and process it. You can learn the things of QGIS. Today मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रास्टर और वेक्टर फॉर्मेट इनपुट कैसा करना है, वहां पे प्रोसेस कैसे करनी है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. और एक केस स्टडी है, दूसरी केस स्टडी है जो फ्लड मैपिंग जो रहता है, फ्लड हजार्ड जोनेशन मैपिंग रहता है ना, वो पानी कैसे कैसे ऊपर आता है, कैसे नीचे जाता है, वो मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ. क्योंकि टाइम अगर हम देखें तो टाइम जो है वो टाइम बहुत कम रहता है. वो GIS जो भी सीखना है सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए एक या 1.5 घंटा काफी नहीं होता. तो थोड़ा बहुत मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा. तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ और करूंगा, वो आपको क्या करना है, सिंपली नोट करना है कि अभी हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे. क्योंकि रास्टर और वेक्टर डाटा जो है, जो डाटा अभी वो कहाँ से डाउनलोड करना है वो अलग बात है. क्योंकि रास्टर डाटा जो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल रहेगा, या लैंड यूज लैंड कवर, LULC मैप रहते हैं, लिनियरमेंट मैप रहते हैं, और जो मैप रहते हैं वो मैप भुवन की जो वेबसाइट है वहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं वो डाटा. अब अभी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है. सो अभी हमने वो डाउनलोड करके रखा है आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल सेशन. फर्स्ट आई वुड लाइक टू प्रोसेस द वेक्टर डाटा फॉर्मेट. Vector. So you have to click on add vector layer. Add vector layer. This kind of window will be open. Then यहाँ पे आप देख सकते हैं वेक्टर लिखा है, और क्लिक कहाँ करना है, ये ऊपर कोई भी क्लिक नहीं करना है,
सोर्स जो है, हम डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हमने स्टोर किया रखा है, वहां से डाटा यहाँ पे इनपुट करना है। तो वेक्टर डाटा जो है, तो यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं वेक्टर डाटाबेस सेट पे, डाटा सेट्स पे, वहां पे क्लिक करना है। मैं स्लो दिखा रहा हूँ ताकि आप नोट कर सकते हैं। और जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जो लोकेशन रहता है, वो लोकेशन पे जाके क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद शेप फाइल, मैंने क्या किया है, महाराष्ट्र की पूरे शेप फाइल्स, डिस्ट्रिक्ट की शेप फाइल और जो बाउंड्रीज वगैरह है ना, वो पूरा मैंने डाउनलोड करके रखा है। और जो वेक्टर फाइल रहती है, उसका जो फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट है ESRI शेप फाइल, ESRI शेप फाइल। इज इट विजिबल टू ऑल? Is it visible to all? Yes, sir. Okay. ESRI shape file. Once you click on the ESRI shape file format. May I disturb you, sir? Hello. Yeah. सर, आपके केबिन से दूसरे कुछ आवाजें आ रही है. That's why we can't be able to hear you. Yes, sir. There is a little bit disturbance from. Yes, please. यहाँ पे एग्जाम चालू है, इसी वजह से शायद थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम चालू है। हाँ, तो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा हाँ, एक मिनट। बोले सर, सुमित सर। Yes, please. Okay, sir. Please continue. Okay, sir. Sir, Sir, can you अभी please party, repeat sir, there is a question. Yeah. That question is, how you will get the shape files? Where is the source of shape files? So that the rest of the participants, they can download the shape files and can work on that. Okay. At the end of session, I will say this. Okay, sir, no problem. Please go ahead. Okay, at the end of session. This once again, I would like to repeat this thing. If vector data enter into the QGIS interface, click on add vector. Click on add vector layer. This kind of window will be open. Is it visible to all? Participants kindly put yourself. Participants are Is requested. it visible to all? Yes, sir, it is visible. Okay. Participants are requested to please mute your mic. Mike, okay. Participants, please mute your mic. Okay. Click on vector data set. Here 3 dots are visible. Click on that. Once you click, another window will be open, and we require vector data file. So data which were collected from the various sources, the vector data, click on that. Then format must be ESRI shape file. Once you click this, only shape files are open. I click on district shape file and click on open, and click on add and close. Once click on add, the data will be entered into the QGIS interface. Sir, Ajit Kumar ji. हाँ सर.
Yes. Sir, because of some disturbances in your laboratory, I think we can't be able to hear properly. So Okay, please okay. once again give the demo of how the map has been brought to the QGIS interface. GIS Okay. interface, Okay. please. Okay, okay. This is the QGIS interface. The adding of or how to input vector data file. Just simply click on add vector layer. Here, add vector layer. Or click on source. Open data source manager. There are two different ways to input the vector or raster file. Shortcut, that is simply click on add vector layer or open source. Yes, sir. Open data source manager. If you click on this, the such kind of window will be open. Once open, click on vector database datasets. In that vector dataset, 3 dot is seen here. Click on that, and the data which is collected from the sources, click on we required data. जो हमको चाहिए वो डाटा हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिंपली ओपन पे क्लिक करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे क्लोज ऐड और हेल्प वहां पे ऐड पे क्लिक करना है. सिंपल ऐड पे क्लिक करने के बाद वो डाटा QGIS इंटरफेस में ओपन हो जाएगा. तो ओपन होने के बाद यहाँ पे दिखाई लेयर पैनल में दिखाई देता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो दिखाई देने के बाद हमें सिंपली क्लोज करना है. ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर, यस सर, वेरी गुड. ओके ओके. अभी हमारे पास जो डाटा है वो डाटा, उस डाटा को कहते हैं स्पेशल डाटा. स्पेशल डाटा. अगर स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा जो मैंने पहले बोला था, तो वो है स्पेशल डाटा. अगर स्पेशल डाटा है तो वो क्या होता है? अभी सभी को मालूम है कि ये महाराष्ट्र का डाटा है. महाराष्ट्र का मैप दिखाई दे रहा है. लेकिन उसके अंदर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हमें चाहिए कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, वो हमको कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हमें वहां पे नेम होना चाहिए ना, एडजस्ट होना चाहिए, वहां पे नेम दिखाई देना चाहिए. तो वो डाटा जो रहता है वो डाटा इज नथिंग बट दी नॉन स्पेशल डाटा, एट्रीब्यूट डाटा. और वो डाटा जो है वो कहाँ पे मिलता है? तो डिस्ट्रिक्ट पे, यहाँ पे लेयर पैनल में जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे राइट क्लिक करना पड़ता है. राइट क्लिक करने के बाद नीचे लास्ट में प्रॉपर्टीज है, उस पर क्लिक करना है. प्रॉपर्टीज, उस पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगा. एक विंडो ओपन होने के बाद देखते हैं अभी क्या होता है. ये विंडो ओपन होता है. तो विंडो ओपन होने के बाद अभी हमें जो दिखाई दे रहा है वो पूरा रेड कलर का, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है पूरा महाराष्ट्र. हमें वो खाली बॉर्डर दिखाई देनी चाहिए. तो इसके लिए क्या करना है? जब फिल के नीचे सिंपल फिल दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करना है और सिंबल लेयर टाइप में यहाँ एरो पे क्लिक करके लास्ट का जो पॉइंट है आउटलाइन सिंपल लाइन, आई थिंक यू रोट समवेयर, राइट समवेयर, आउटलाइन सिंपल लाइन, वहां पे क्लिक करने के बाद हमें बॉर्डर्स खाली दिखाई देंगे. सिंपल फिल कट हो जाए. ठीक है, सिंपली अप्लाई करना है और ये करने के बाद देखिए बॉर्डर दिखाई देते हैं खाली. और एट्रीब्यूट टेबल जो रहता है वो एट्रीब्यूट डाटा इज नथिंग बट दी, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन एट्रीब्यूट टेबल. वो जो डाटा रहता है, मैंने बोला था कि
टेबल फॉर्मेट में रहता है, कॉलम और रो। सर இது அப்புறம் பாத்து நம்ம கதையை முதல்ல முடிங்க एसोसिएटेड डाटा है சார் நம்ம கதையை முடிங்க वो சார் डाटा जो है वो नेम, நான் போன டைம் ஆச்சு शेप, एरिया, இந்த கதையை அப்புறம் பாத்துங்க Hello. हाँ हेलो குழப்பாதீங்க I think someone's mic is turned on. டிபி மேல ஒட்டுங்க Are Manias அது அந்த கவர்மெண்ட் ஒட்டுங்க இது கைது போடுங்க சார் Maniarasu. இந்த காரணல கைது போடுங்க போடுங்க சார் என்ன விடுங்க சார் ரெண்டு கைது போடுங்க சார் நீங்க யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கீங்க பாத்தீங்க Dr. Ajit Kumar. हाँ सर बोलिए। Sir, I think some people are talking in Kannada. I think they are with your own, I think, nearby place. सर क्या करना है पता है क्या, आप एडमिन वहाँ पे है, एडमिन से वहाँ से पूरा सबका में वॉल्यूम म्यूट कर सकते हैं। No, some people are nearby you, they are talking in Kannada. हाँ Hello. हाँ हेलो Yeah. Actually, there is no voice from Ajit sir. There is voice from the other participants. Okay, fine. Hello, participants, they are requested to please mute yourself. Admin, Kolla madam, are you there? मैडम जो एडमिन रहता है उसको अथॉरिटी रहती है कि वॉल्यूम म्यूट कर सकते हैं। जो एडमिन रहता है उनको अथॉरिटी रहती है। ஏற்கனவே முக்கா வச்ச முடி கொட்டி போச்சு உங்களுக்கு யோசனை பண்ணி ஹலோ அதிகமா திங்க் பண்றது हेलो are requested to mute it. நீங்களே என்ன டை அடிக்கலையோ मैडम டை அடிக்க விட்டீங்களா जो एडमिन रहता है उसको अथॉरिटी रहती है कि अदर पार्टिसिपेंट के वॉल्यूम म्यूट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो वहां से कर सकते हैं। ஆமா 8 மணி நேரம் தூங்கணும் 7 மணி நேரம் தூங்கணும் அந்த முடி கொட்டணும் தூங்க சொல்ல சார் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இதை பத்தி நினைக்க கூடாது நைட்ல யார் போன் எடுக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க 8 மணிக்கு மேல போன் நினைச்சிட்டு கொஞ்சம் மாத்தி நம்ம கண்ட்ரோல் தான் ஓட வேண்டியதான் அதுல என்ன PR Maniar kindly mute your audio. தலைவா நீங்க அத சீல் வைப்பா கட்டி வைப்பா அதுல வைக்கிறது சீல் எனக்கு தெரியும் அதுல வைக்கணுமா அது வெச்சிரும் எல்லாத்தையும் வைப்போம் சார் हेलो சார் கிட்ட சொல்ல போறாரு மாஸ்டர் हेलो कोल्ला मैडम Yes, sir. Sir, I have not given the permission, so not able to mute them. சார் அடுத்து லேப் கொண்டு வரேன் एडमिन हु इज நேரா வந்தா Hello, एडमिन कौन है? शेखर सर को फोन करो जरा अब मचान சொந்தக்காரர் शेखर सर को फोन करो। हेलो मैडम Yes, sir. म्यूट करायचं तर कोणीतरी माणूस बडबड करतोय ऍडमिनला सांगा म्यूट करायला। सर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होतो आहे अजित कुमार because I don't want such kind of a disturbance because you are information very nicely to the participants but because of only one participant is what is the name? It's PR Maniar something. PR Maniar மெட்டல் சீல் இல்ல மெட்டல் சீல் போல்ட் தண்ணி இல்லையா தண்ணி இல்ல அவர வச்சிரு உங்களுக்கு தண்ணி அது கம்முனா நான் ரேட் கொடுங்க அடிச்சிரோம் அவளோட போட்டு நிக்குது Sir, I would like to suggest that if you will not be able to mute him, otherwise remove the participant. Otherwise, yes, that is okay. Mania Saru, may I audible to you? Hello, Mania Rasu, उसको हटा दो।
founder principal. Founder. Remove that participant, sir. பழைய எஜுகேஷன் பயங்கர க்ளோஸ் ரிலேஷன். முதல்ல பிரின்சிபல் சொல்லுங்க அப்படியே. ஆமா ஆமா. டெப்யூட்டேஷன் வந்தார் சார். டோட்டல். சரியான மனுஷன். Sir, kindly mute yourself. ராதாகிருஷ்ணன் சார் மாதிரி வராது சார். அவர்தான் காட் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் இன்ஸ்டிடியூஷன். பேர் சொன்ன ஓடிடாரு. இவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது காரணமே இவரு கிடையாது. ராதாகிருஷ்ணன் சார், ராதாகிருஷ்ணன் பிரின்சிபல் சார். Hello. அதான் கிங் லெக்சர். Can I suggest something, sir? அவர் பிடிக்குன்னு சொல்லி ஒரு பேத்தி அனுப்பிவிட்டாங்க. Hello. If someone has the registration data, then that person can have his contact number there in the registration data. ரகுநாதன் கைட் வாங்கணும். Kindly remove that participant, sir. எதுக்கு அவர்கிட்ட ஏன் நீங்க வாங்க போட்டீங்களா? Respected Mariana, kindly mute your audio, please. Can mute them, sir. Can mute them. Vashni Ramteke madam can mute them. Yes, sir. We are telling her actually she is in. We are looking after it. Remove the participant. எதுக்கு? அதை வேற சைட்ல பாக்குறாரு சாரு. आपने एडमिन नहीं रोज करना और यादव लंबा बराबर वैष्णवी रामटे के मैडम போட்டோ என்ன போட்டு கொடுங்க அவருக்கு போய் அவ்வளவுதான். யாரு பிரின்சிபல் இல்லைங்க தெரியும், நான் சொல்லிட்டேன். போட்டோ என்ன போட்டோ கொடுங்க வந்துடுவார் சார். Yes, sir. It is solved. Slowly, sir. You can continue here. Sorry for the inconvenience. Ajit, so your mic is muted, sir. Okay. For attribute data, simply right click on district on layer, then click on attribute table. As I discussed in the PPT, that is a non-spatial data.
and that is attribute data. This is shown in front of you. This is the non-spatial data, the information which is given by the spatial data. So for that, once you click or right click on that label here, ABC, click on that label, then again click on single label, then label with name. Once again, I would like to repeat. Simply right click on properties, label, single label, and name. Simply apply, click on apply and OK. Once you click this, the data will be shown in front of you. These are the names of various districts. If we working on particular district, we have to clip the district from the Maharashtra state. So I would like to clip the Sangli district. We are working on vector data set. So हमें क्या करना है, वहां पे मेनू बार है, मेनू बार में वेक्टर जो लिखा है वहां पे क्लिक करना है. और क्लिक करने के बाद पहले मैं बताता हूं, जो हमको जिस डिस्ट्रिक्ट पे काम करना है वो डिस्ट्रिक्ट हमें महाराष्ट्र स्टेट से क्लिप करना है, वहां बाजू में निकालना है. तो इसके लिए क्या करना है, वेक्टर एनालिसिस है. वेक्टर एनालिसिस प्रोसेस में बता रहा हूं. तो उसके लिए सिलेक्ट फीचर है, वो भी रहता है. पहले सिलेक्ट फीचर पे वहां पे क्लिक करना है और सिंपली जो डिस्ट्रिक्ट हमें क्लिक करना है उस पे जाके क्लिक करना है. और क्लिक करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा. और सिलेक्ट कैसे होता है अच्छी तरह से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वो प्रॉपर्टीज में जाके जो सिंपल आउटलाइन जो किया था मैंने उसको मैं सिंपल फिल कर देता हूँ. Simple fill. Once you click on select Sangli district, the district will be shown in different color. So it is selected. Once selected, click on vector on menu bar. Menu bar पे जो vector है वहां पे क्लिक करना है. वहां पे जाके जियो प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है. जियो प्रोसेसिंग, देन क्लिप जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है. जियो प्रोसेसिंग एंड क्लिप. और क्लिप करने के बाद यहाँ पे हमें देखना है कि क्या है डिस्ट्रिक्ट. जो लेयर में दिखाई दे रहा है वही लेयर है क्या है. तो होने के बाद वो हमें कौन सी फाइल क्लिप करने है वहां से, तो सिलेक्टेड फीचर. तो चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, सिलेक्टेड फीचर्स ओनली. यहाँ पे नीचे भी क्लिप लेयर, सिलेक्टेड फीचर ओनली. अभी मैं अगर ये फाइल एक क्रिएट टेम्पररी लेयर दिखाई दे रहा है, अगर हमको परमानेंट सेव करना है तो वहां पे आगे जो 3 डॉट है वहां पे क्लिक करके सेव फाइल टू फाइल, जहां पे हमको सेव करना है वो वहां पे नेम देना है. अभी मैं क्या करता हूँ, टेम्पररी फाइल ये करता हूँ. नहीं तो न्यू फोल्डर करना है, वहां पे जहां पे आपने करना है ना वो न्यू फोल्डर करके जो आपको चाहिए वो नाम लिख सकते हैं. अभी जो है वो सांगली डिस्ट्रिक्ट है. नाम सेव करना है वहां पे. और सिंपली सेव करने के बाद यहाँ पे देखना है ओपन आउटपुट फाइल आफ्टर रनिंग अल्गोरिथम. अल्गोरिथम रन होने के बाद आउटपुट
ओपन होना चाहिए, वो चेकबॉक्स में चेक किया है या नहीं देखना है, अगर है तो सिंपली छोड़ देना है और रन इन बैकग्राउंड वहां पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक इट टेक सम टाइम एंड लेयर इज क्लिप्ड, टास्क कंप्लीटेड मैसेज दिखाई देगा। क्लोज करना है। अभी क्लोज करने के बाद हमें दिखाई देगा कि सांगली का कलर अलग से आया और यहाँ पे क्लिप्ड दिखाई दे रहा है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेव फाइल है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके रिमूव करना है, या फिर हमें नहीं जरूरत नहीं है तो यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है वहां पे भी क्लिक किया तो वो चला जाता है। अभी ये छोटा दिखाई दे रहा है, तो पूरे स्क्रीन पे दिखाई देने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करके जूम टू लेयर पे क्लिक करना है। ये हो गया क्लिप प्रोसेस, क्लिप प्रोसेस हो गया। और उसके बाद ये सिंपल ही दिखा है, अभी टाइम बोले तो 3:30 हो गया है, ऑलरेडी 3:30 हो गया है, तो मैं वो थोड़ा सा फास्ट फास्ट करके दिखाता हूँ। ये हो गया वेक्टर एनालिसिस में क्लिप। अभी मैं रास्टर का भी साइमल्टेनियसली दिखाता हूँ। अभी रास्टर डाटा जो है डिजिटल एलिवेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एलिवेशन मॉडल, आई ऑलरेडी डाउनलोडेड फ्रॉम भुवन साइट। रास्टर सिलेक्ट करके सिंपली जैसे वेक्टर मैंने ऐड किया था वैसे रास्टर ऐड करना है। ऐड करके यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है, तो वो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। अभी हमें क्या करना है, तो सांगली का जो मैप है उसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल अलग से बनाना है। तो इसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, सांगली की पहले सिंपल फिल की वजह से सिंपल फिल जो है उसके अलावा मैं आउटलाइन सिंपल लाइन आउटलाइन करता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर का थिकनेस बढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली विजिबल हो और दिखाई दे। जो अभी जो फाइल है ये फाइल, ये पूरा डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स है। बहुत सारे टाइल्स मैंने डाउनलोड किए हैं फ्रॉम भुवन मैप, भुवन साइट से डाउनलोड किए हैं। शायद किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि भुवन साइट जो है भुवन.com गवर्नमेंट की साइट है, वहां से हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल और अल्सो वेक्टर फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं हम। तो अभी रास्टर एनालिसिस, रास्टर में से इतने बड़ी जो टाइल है वहां से हमें सिर्फ सांगली का डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है क्लिप करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खाली हमको क्या करना है कि रास्टर जो मेनू बार में जो रास्टर है वहां पे जाके एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन पे क्लिक करना है। तो दो टाइप में हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्लिप रास्टर बाय एक्सटेंट एंड क्लिप रास्टर बाय मास्क लेयर। हमें क्लिप रास्टर बाय मास्क लेयर चूज करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप विंडो ओपन होता है। वहां पे इनपुट लेयर जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल हमने यहाँ पे इनपुट किया है वो लाना है। देन मास्क लेयर, वो कौन सी लेयर होनी चाहिए, जो क्लिप लेयर है वो हमें सिलेक्ट करना है। देन असाइन स्पेसिफिक नो डाटा वैल्यू तो आउटपुट बैंड, यहाँ पे नॉट सेट लिखा है वहां पे 0 लिखना है, 0। देन क्रिएट एन आउटपुट अल्फा बैंड, वहां पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद अगर हमें परमानेंट सेव करना है तो यहाँ पे जाके हम सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से नेम नहीं दे सकते। तो वहां पे वैसे वेक्टर फाइल का नेम दिया था वैसे ही सेम 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे सेव फाइल टू नेम देना है। आउटपुट फाइल आफ्टर रनिंग एल्गोरिथम, यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपली रन इन बैकग्राउंड पे क्लिक करना है।
It takes some time to clipping the process. It is really wonderful, sir. It is taking time, no problem. But Okay. really, this hands-on training will definitely give edge to our participants also. Okay, okay. Thank you, sir. Yes, sir. Yes. Layer is already clipped. Yes. This is Sangli district shapefile. Sorry, digital elevation model of Sangli district. अगर अभी एक और एक ट्रिक बताता हूँ. अगर कंटूर सर्वे करना है तो सिविल इंजीनियर जो स्टूडेंट रहते हैं उनको टाइम बहुत लगता है. एक छोटा सा अगर एरिया रहेगा और एरिया भी कंटूर सर्वे करने के लिए शायद हाफ डे या पूरा डे लगता है, और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद भी ड्राइंग शीट बनाने के लिए भी हफ्ता लग जाता है, और हफ्ता होने के बाद भी बहुत सारे करेक्शंस आते हैं. लेकिन अगर हमारे पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल रहेगा, जो हमें एरिया सिलेक्ट करना है या कुछ भी करना है, उसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल रहेगा, तो उसको कंटूर जो है, कंटूर इंटरवल विदाउट एनी डिफिकल्टीज और विदाउट एनी mistakes, we can create contours in fraction of second. So simply हमें क्या करना है, रास्टर पे जाके क्लिक करना है, then extraction and contour. extraction and contour, यहाँ पे हमें फाइल सिलेक्ट करनी है क्लिप्ड, जिस एरिया के हमने सांगली के में कंटूर निकालने वाला हो. कंटूर इंटरवल जो आपको चाहिए वो कंटूर इंटरवल आपको यहाँ पे मिलेगा. कितना भी कंटूर इंटरवल का बोलिए, 0.1 का भी रहेगा तो भी मिलेगा. अभी मैं 50 मीटर का कंटूर इंटरवल देखता हूँ. एट्रीब्यूट में यहाँ पे एलिवेशन है या नहीं वो देखना है, बाकी पूरा वैसा ही छोड़ना है, बाकी को यहाँ पे क्लिक नहीं करना है. देन यहाँ पे है या नहीं आउटपुट और ओपन आउटपुट फाइल आफ्टर रनिंग एल्गोरिथम, यहाँ पे क्लिक है या देखना है, और सिंपली क्लिक ऑन रन इन बैकग्राउंड. once again it takes some time. Okay, the contours were generated. See, these are the contours of whole Sangli district with 50 मीटर 50 मीटर के कंटूर इंटरवल के हिसाब से मैंने वो कंटूर निकाली है without any mistakes. You can see contour values also. Simply click on right click on contour, click on properties, then label, single label with elevation, and apply, and okay. Once you click done this process, the values will be shown here.
see the values of contour. These are the contour values. अभी मैंने बोला था कंटूर सर्वे करने के लिए हमें टाइम कितना लगता है, 1 दिन, और उसकी ड्राइंग शीट बनाने के लिए हमें लगता है शायद पूरा हफ्ता या 2 दिन। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, हमें करेक्शंस मिलते हैं और करेक्शन करते हैं। तो अगर हमारे पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल रहेगा उस एरिया का, तो उसके कंटूर इंटरवल जो चाहिए वो कंटूर इंटरवल हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर सकते हैं। ये रहा कंटूर इंटरवल का डेमो। This is the small kind of vector and raster analysis, extraction of contour values, then digital elevation model, clipping of digital elevation model. These are the few some examples. Then this is about QGIS, this open source software. I would like to share another video, share another screen. It is for ArcGIS. See, this is the one of the area of one of the area of Jagbudi River catchment area basin. फ्लड सिमुलेशन मॉडल, अगर फ्लड आता है तो फ्लड कैसे वहां से ऊपर नीचे होता है पानी वगैरह, वो हम देख सकते हैं। वो अभी देखिए, अब मैं करके बताता हूँ आपको। इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, sir, it is visible. No problem. Yes. Okay. This is 3D model. So all see. This is 3D model of Jagbudi River catchment area. Then, if we animate this, you see the beauty. How water is increased by depth. You can see the 3D model. How water is increased and down. अगर फ्लड आता है तो फ्लड कहाँ तक ऊपर आ सकता है, इसका हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये मैंने खाली डिजिटल एलिवेशन मॉडल पे ही किया है। इसके ऊपर हम लैंड यूज लैंड कवर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, कंटूर इम्पोज को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर 1 मीटर पानी ऊपर होता है तो पानी कहाँ तक जाएगा, 5 मीटर होता है, 10 मीटर होता है, तो पानी कहाँ तक आ सकता है जमीन पे, ये हम देख सकते हैं। दिस इज दी 3D model, flood risk simulation model of Jagbudi River. Is it visible to all? Yes, sir. Perfect. Very nice. Very good demo. Okay, sir. Thank you, sir. So, this is about lecture of a small introduction of remote sensing and GIS. Remote sensing is the database and GIS is the processing system. Simply single word. Okay, I think you all understood the things of remote sensing and GIS. Yes, sir. Yes, very nice, sir. So, can I stop the sharing screen and yes, sir. question answer session can be start? Yes, sir. Yes, sir. Madam, are you there? Yes, sir. Hello. Pooja ma'am. Pooja ma'am. Thank you very much, sir, for your valuable inputs on the GIS special and non-special data. It will be very helpful for all the faculty members who are attending the session. It was a great demo from your side. Thank you so much, sir. Okay, thank with you. this, I wanted to ask if any of the faculty members or the participants need to ask any question, then the forum is open for you. Please ask your question. Ma'am, few questions are posted in the chat box, so you can refer it, Pooja ma'am. Yes, any questions from the participants? Pooja madam, in the chat one box, question. some questions are there. Yeah, sir. From Vivek Wag, sir.
He wanted to ask, often it shows Python You error. Why? also can put your questions in the chat box. Aradhana madam, please continue. Yes, sir. Yes, sir. One question is there. How QGIS is work on land acquisition? Any questions? Madam. Pooja ma'am, am I audible to you? Chat box. It looks we have covered all the points and the important questions. Hello. Aradhana madam, please. Just, is there anything else that you wanted to cover before moving ahead, sir? Pooja Kolla madam, can I, may I audible to you? Sir? Hello. Pooja ma'am. Pooja ma'am, are you? Yes, sir. अरे भाई मैं कब से बोल रहा हूँ, just wait. Aradhana madam is asking questions. Sir, there was a disturbance from the other side that due to network issue, I was not able to hear you. Please. Yes, sir. Sorry. Aradhana madam, please continue with the question. And questions are there in the chat box. I said to you, ma'am. Okay. Yes, sir. Pooja ma'am, you kindly mute yourself. Okay. Yes. Yes. So the first question is from Vivek Wag, sir. Why it shows Python error often? Python error. Okay. Yes. Okay. That depends upon which software you use. Some updation is there required. Because of that, Python error is there, occurred there. Okay. One more question is in chat box. How I think Mangesh Hase. How QGIS is work on land acquisition? Yes, sir. लैंड एक्विजिशन करते समय क्या होता है कि कहाँ पे अगर एरिया जो है, अब अगर एक रोड जा रहा है, हाईवे अगर किसी कहाँ से तो हाईवे जा रहा है, तो हाईवे कौन से जगह से जा रहा है, कौन से लैंड पे जा रहा है, वो हम QGIS के थ्रू मार्क कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोगों को बता सकते हैं कि लैंड एक्विजिशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, तो QGIS उसके हिसाब से यूजफुल रहता है. Then another question. Actually in non-spatial data in what is it in simple word? Spatial and non-spatial. Spatial data. Yes. Spatial data means in the form of vector and raster. That is in the form of line, polygon, or dot. Simply. And raster, that is spatial data is in the form of image. And what image is, what it is, that tells the non-spatial data. Okay, sir. The next sir, there is a question from Saurabh Ghule. Yeah. There are so many versions of QGIS software on the website, which we will have to download. This is one, and this is one question. And there is another question. How to download shape files? हाँ, बताता हूँ. QGIS का लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे. जो लेटेस्ट रहता है वो लेटेस्ट करना अच्छा रहता है. अगर उससे पहले वाला भी डाउनलोड किया तो भी चलेगा, क्योंकि लेटेस्ट जो रहता है वहाँ पे थोड़े से बग्स रह सकते हैं, तो उसी वजह से पाइथन एरर भी आता है. अभी पिछला क्वेश्चन भी मैंने किसी ने पूछा था कि पाइथन एरर क्यों आता है. अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा तो कभी-कभी बग्स रहते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पे पाइथन एरर आ सकता है. 3:30 ला संपायला पाहिजे, पण आपण आता ते क्वेश्चन आन्सर चालू करायचं. तो वही, और जो शेप फाइल्स या डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स जो है वो डाउनलोड करने के लिए सिंपली हमें भुवन वेबसाइट पे जाना है और वहां से डाउनलोड करना है. थीमेटिक मैप्स रहते हैं और शेप फाइल्स रहती है, वहां से हमें डाउनलोड करना है. Sir, again the next question is, yeah, from strategic importance, will such extracted data, is it safe? Because everyone can extract it. The data is safe. Important will extract the data safe. This question, na? Data is safe, but the data extracted, it must be filled
एनालिसिस, हमें क्या करना है, जो हमने जो किया है उसका टैली फील्ड में जाके एक बार 1 या 2 पॉइंट जाके करना ही है। अगर नहीं किया तो कभी कभी डाटा जो है वो मिसप्लेस हो जाता है या फिर क्या मिस इंटरप्रेट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कंटूर एक्सट्रैक्शन करते हैं या फिर कोई अलाइनमेंट फिक्स करते हैं थ्रू जीआईएस या रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। अलाइनमेंट फिक्स करने के बाद अगर हमने फील्ड में वहां पे जाके नहीं देखा कि अलाइनमेंट वहां से जा रही है तो यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्या होता है वो डाटा जो रहता है सॉफ्टवेयर का डाटा या फिर रिमोट सेंसिंग डाटा जो रहता है वो बैक डेटेड डाटा रहता है। तो बैक डेटेड डाटा रहता है तो वहां पे जाकर अगर अलाइनमेंट एक जगह से जा रही है, वहां पे अगर किसी ने अपना घर कंस्ट्रक्ट किया है तो वो डाटा हमें मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं उसका टैली हमें फील्ड में जाके करना ही पड़ता है, तभी वो डाटा सेफ और परफेक्ट हो जाता है। सर एक सवाल था। हाँ बोलिए। दिस इज डॉक्टर जैद स्पीकिंग। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये बताना है कि QGIS और ArcGIS उसका इंटरफेस में क्या चेंजेस है। QGIS और ArcGIS इंटरफेस में ज्यादा चेंजेस नहीं रहते। ArcGIS है वो कमर्शियल वर्जन है और QGIS है वो ओपन सोर्स वर्जन है। थोड़ा सा जो इनपुट मेथड है और मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, लेकिन जो काम जो है वो सेम ही करते हैं। QGIS हमें फ्री में अवेलेबल होता है और ArcGIS मैंने कहा था 1 लाइसेंस कॉपी टेक्स 1 लाख। यस सर, मोर देन दैट प्रोबेबली। मोर देन। हाँ जी। और एक चीज और एक सवाल था कि अगर मैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है टीचर्स भी है और स्टूडेंट्स भी है, तो इफ दे वांट टू टेक अप एनी प्रोजेक्ट ऑन एनी टॉपिक ऑफ देयर चॉइस, तो QGIS अगर हम लोग यूज करते हैं इंटरफेस को, तो रिसर्च के लिए वो कितना फायदेमंद होगा? 100% फायदेमंद है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कंक्लूजन्स आर कंसर्न, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Okay, wonderful sir, thank you very much for your answer. Okay, hello sir. Vivek. Yes sir, in relevance to your question sir, actually I'm also from MAT Bhujbal Knowledge City, Nasik. Okay. So I want to go for such kind of a project, but again, what is the question I have been asked is regarding the strategic importance, like the army and defense, like this such kind of an area point of view. Is there any kind of some restrictions or some kind of an obligations? We do have to give some kind of a underwriting for such kind of a work. Yes sir, yes sir. On behalf of Dr. Ajit Kumar ji, I would like to give the answer to this question. Actually, as far as remote sensing satellite imageries are concerned, of course there are certain restrictions, because if suppose there is a defense land, you can't be able to get the satellite image of that particular area. That is but natural, right? Okay. Yes, yes. Okay sir. So well, accordingly you will have to choose your field of studies, and accordingly you will have to go, sir. Well, I think Ajit Kumar ji, if yes sir, yeah, you are right sir. I agree with you. Yes sir. Okay. If we get a satellite imagery of that place, but that imagery is far backdated, बहुत ही backdated रहती है imagery को. One more question sir. Yeah sir, बोलिए. The data is distorted somewhat because what is the data we are extracting from the Google Earth, from that strategic point of view, it was purposefully distorted from strategic point of view. Is it going to be happen in this case? Yes sir, exactly right, you're right. Yes sir, yes sir. Once again I would like to give the answer to this question, sir. Some of the distortions Vivek sir, there is all the time some kind of a error in satellite images, and that's why we are now after this particular program, I think day 2 program will be on image processing. So image processing will be there, and where you can remove the errors from satellite image, and how you will do that, we will discuss about that in tomorrow's second session, right? And apart from that one,
Definitely, as you had said, some of the errors are deliberately introduced in some of the data which are very, very sensitive. That is true. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Vivek Vak, sir, thank you very much for your wonderful questions. Thank you, sir. Yeah. Anybody is having any question, or shall we go ahead for the concluding Yes, sir. remarks? One more thing. Many of them have also asked that whether they can have your PPT, and also they needed more such sessions. Yeah, demos. sure. Yes. Well, I'm really I will very provide happy. PPT to Dr. Jain sir. Yes, sir. Yes, You do a PPT to Dr. Jain sir. Yes, sir. Yes, sir. And I'm really fortunate to be there with you, Dr. Ajit ji. One thing, another thing is, as rest of the participants are stating that we will have to have such sessions even in the future. So I request all of you, well, on behalf of all the participants, I request you to please available with us if we are going for the what you say, workshop kind of a thing in the future. Okay, sir. Yeah, I thank you, will sir. definitely available. Yes, sir. Thank you very much for your acceptance on this forum. Yes, sir. Now, Aradhana madam. Yes, sir. One more request. I request all the participants to kindly on your video so that we can take one snapshot. All the participants are requested to on their videos. One request for organizing team. Yes. Kindly share the recording of this meeting that is related to the practical part of the session. So that video should share with the participants. So that will be beneficial. Yes, Dr. Sagar. I will definitely, we will look into this matter. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. I would like to say one thing. Yes, I am very much thankful to organizing committee members, HOD, Department of Civil Engineering, D.Y. Patel College, Pune, for inviting me for such kind of valuable STTP. Thank you very much to all. Yes, sir. Thank you, sir. So nice of you, sir. Thank you. Yes. Kindly Aradhana keep the madam? video on. Yes. All the participants, they are requested to put on your video now, because we will be taking a screenshot of all of you, please. I think maximum they have. All the participants to turn on your camera. Somebody is having phone and laptop both on. That's why there is a echo. Yeah. Okay, fine. Yes. Whether almost all they have opened up their videos. Yes, sir. Yeah, please take the screenshot, and if it is over, please let us know. Is it okay? Who is taking photograph, please? Yes, sir. Yes, sir. It was done. Yugandhara ma'am was taking. Yugandhara ma'am. Is it done, Yugandhara ma'am? Yes, ma'am. Okay. Thank you, everyone. Yeah, now switch off your videos. Please proceed with the vote of thanks, please. Okay. Yes. Pooja ma'am. Yes. Thank you once again, sir, for your valuable data on the GIS, special and non-special data, and demarcation of the dam catchment and catchment area. As the participants are willing to have these sessions like this, many more, it will be very helpful for them. Thank you once again. So as the question answer part is over, I request all the participants to give the feedback which is already shared in the chat box. Yes, all the participants are requested to give your feedback, which is posted in the chat box.
and all of you are requested to join tomorrow's session. Okay, Pooja ma'am, can you post it again? One of the Yes. faculty can, Yeah, I will post it again. The feedback link. You can give your valuable feedback on this. Yes. Kindly check in the chat box. Well, the participants are requested to be present online at 11 a.m. in the morning tomorrow. All right. So satellites and sensor characteristics. This is the first session. And after the lunch break, there will be digital image processing 1 by Dr. Pandey, Government of Uttar Pradesh, UP. So that session will also be interesting. And one more request is that whenever the Zoom link is given to you, you are all requested to mute yourself. Yes, the feedback link is shared again. You can check and give your feedback. Can I leave this? Yes, sir. Thank you so much, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. With this, I conclude the session is ended. All the participants can leave and attend the tomorrow session at sharp 11 a.m. Thank you. Yes.
Hello. Hello. Am I audible? Yes sir, you are audible sir. अभी क्या ब्रेक है क्या? नहीं सर, शायद एंड हुआ है, एक बार कंफर्म करते हैं. हाँ वही बोल रहा था. शेखर सर, एंड झालाय सेशन. एंड झालं ना? ओके. संदीप हा धनंजय बोल की रे. अरे लिंक चॅट मध्ये पण दिसत नाहीये आणि फेसबुकला पण नाहीये. एक मिनिट हा. मॅडम इज देयर एनी लिंक? हॅलो. टेस्ट लिंक म्हणतो का? व्हॉट्सअपला पाठवतायत. व्हॉट्सअपला. हा व्हॉट्सअप ग्रुपला पाठवली तरी चालेल. हा व्हॉट्सअपला पाठवतात. हो हो. आता एकदा शेअर केलीये सर, एकदा चेक करा विजिबल आहे का? मॅडम व्हॉट्सअपला पाठवून द्या. ठीक आहे. ओके सर. या रिसीव्ड संदीप. येस सर. मॅडम मला होस्ट करा प्लीज. मॅडम मला होस्ट करा. Your host now. ओके.